Okay, so you've grown out your hair or you are growing it out right now, but that isn't going to do much of a thing. बालों को सिर्फ लंबा करने से कुछ नहीं होगा if you're not rocking your long hair like a pro. अगर तुम्हारे बाल लंबे हैं और तुम उनको ठीक से स्टाइल नहीं कर रहे हो या फिर ठीक से क्लीन नहीं कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी रहते हैं या फिर तुम हमेशा ओपन रखते हो अपने बालों को, मतलब जो भी है, सिर्फ तुम्हारे बाल लंबे हैं एंड दैट्स इट, यू आर नॉट मेकिंग एनी मोर एफर्ट्स। तो ऐसी सिचुएशन में जब तुम्हारे बाल ऑलरेडी लंबे हो चुके हैं पर उसके लिए तुम ज्यादा कुछ कर नहीं रहे हो, बस तुम्हारे बाल लंबे एंड दैट्स इट, तो एक्चुअली तुम क्या कर रहे हो? जो भी लोग बोलते हैं कि लड़के लंबे बाल नहीं रखते और लंबे बाल बेकार लगते हैं तुम्हारे ऊपर या फिर व्हाटएवर, तुम उन लोगों को एक्चुअली एक रीजन दे रहे हो कि हाँ वो लोग सही हैं। तुम अपने बालों को अगर सही से नहीं रखोगे तो ऑब्वियसली वो अच्छे नहीं लगेंगे और फिर लोगों को कहने का मौका और मिल जाएगा। सो ओनली ग्रोइंग आउट योर हेयर इज नॉट गोइंग टू मेक यू ऑसम, इट इज गोइंग टू मेक यू लुक गुड, but you can do even better if you make a little bit of effort. So I'm going to share with you 5 things that you need to do to rock your long hair like a pro. तो लंबे बालों के साथ बहुत सारे और भी मुश्किलें आती हैं, जैसे कि you need to keep it clean. And I know that is a huge pain in the neck to keep long hair clean, but we can't help it. तुम्हें अपने बालों को साफ ही रखना पड़ेगा because you know no one likes greasy and stinking hair whether it be long or short. लंबे बालों को साफ करने में ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा परेशानी होती है, I know, पर तुम्हें करना पड़ेगा, वो एफर्ट तुम्हें करना पड़ेगा। तो सिर्फ लंबे बाल करना बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई लंबे बाल कर सकता है। लंबे बालों को मेंटेन करना बड़ी बात है, लंबे बालों के साथ अच्छा दिखना बड़ी बात है। तो तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, तुम्हें अपने बालों को क्लीन रखना पड़ेगा, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम वीक में कितनी बार अपने बालों को वॉश कर रहे हो। अगर कम वॉश करोगे तो ग्रीसी लगेंगे, अगर ज़्यादा वॉश करोगे तो डैमेज लगेंगे, ड्राई लगेंगे। तो I know it is a pain, but you have to do that. You have to find that sweet spot where you're not leaving your hair greasy, but you're not overwashing it either. और अगर तुम अपने बालों में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो तो तुम्हें अपने बाल ऑब्वियसली ज़्यादा वॉश करने पड़ेंगे because of that product buildup in your roots or scalp or hair length or whatever wherever you're applying that product. अगर तुम बहुत कम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो तो तुम्हें इतना वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So that is a point worth noting. अगर तुम्हें मंथ में अपने हेयर वॉश डेज को कम करना है तो you need to use less product if you are using any. But I don't understand, why are you using hair products on long hair in the first place? लंबे बालों को जरूरत कहाँ है भाई किसी हेयर प्रोडक्ट की other than oils? Okay, so in one of my previous videos I told you that there are like infinite hairstyles for long hair. तो उससे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम जितनी बार कहीं बाहर जा रहे हैं अलग अलग हेयर स्टाइल्स बनाकर निकलें। तो बहुत सारे लोग लंबे बाल कर लेते हैं पर कोई हेयर स्टाइल बनाने में उन्हें बहुत आलस आता है। I mean it just takes a single rubber band to make a really good looking hairstyle. तो वो लोग क्या करते हैं, या तो अपने बालों को खुला छोड़ देंगे या फिर एक हेयर बैंड लगा लेंगे या फिर हद से हद एक टॉप नॉट बना लेंगे। भाई ठीक है, अच्छे लगते हैं, बट इफ यू वेयर दैट लाइक फ्रीक्वेंटली एवरी सिंगल डे इट इज गोइंग टू लुक बोरिंग। तो तुम्हारे बाल छोटे नहीं है, तुम लोग अंडरकट के साथ नहीं फंसे हुए, यू गॉट लॉन्ग हेयर, यू लुक ऑसम एंड द थिंग इज यू कैन लुक इवन बेटर। तो why not wear different hairstyles on different occasions? Like you can wear a different hairstyle every single day. Don't stick with a single hairstyle or don't let your hair open all the time. Open long hair अच्छे लगते हैं लड़कों के ऊपर, I know, but you need to wear different hairstyles as well to keep things kind of spiced up. Hey guys, before we move on to the next bit, I'd like to remind you that if you haven't yet subscribed, a like to the video and a sub to the channel will be really appreciated, and it is going to help me a lot. Now when talking about hairstyles, you've got the privilege to improvise न्यू हेयर स्टाइल्स। तो जैसे कि मैं कह रहा था, तुम लोग अंडरकट के साथ नहीं फंसे हुए हो, तुम लोग छोटे बालों के साथ नहीं फंसे हुए हो कि या तो तुम उनको खड़े कर लो या तो तुम उनको बिठा लो। नहीं, ऐसा नहीं है। यू गॉट लॉन्ग हेयर and you have the privilege to improvise new hairstyles. Now I know you've seen a ton of different long hairstyle videos. I mean मैंने बहुत सारे hairstyle videos बना रखे हैं. You can choose anyone from them, but you can also improvise. That means that you can also make your own hairstyles. लंबे बालों की यही एक बहुत प्यारी चीज़ है कि तुम लोग जैसे उनको चाहो वैसे स्टाइल कर सकते हो, जो तुम्हारे माइंड में
वैसी हेयर स्टाइल तुम उनके साथ बना सकते हो. You can use ponytails, braids, top knots, whatever you please, man. You can make new hairstyles. I know you can, and you will, and you need to. तो अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर रहे हो, then you need to start doing that. इमेजिन करो अपने दिमाग में क्या तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा, क्या तुम्हारे फेस शेप को सूट करेगा, और वो हेयर स्टाइल बना के देखो. अगर तुम्हारे ऊपर अच्छी लगती है, वेल एंड गुड. नहीं लगती है, रिपीट. दोबारा इमेजिन करो समथिंग डिफरेंट, दोबारा हेयर स्टाइल बना के देखो, and this time it is going to suit you. Now the fourth thing that I want to tell you guys, learn this by your heart. You don't need to be afraid of what the people are going to say. I know इंडिया में लंबे बालों को बहुत awkwardly ट्रीट किया जाता है. बाहर कहीं भी निकलो लोग ऐसे देखते हैं पता नहीं क्या. पर तुम्हें इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि लोग वह क्या बोलेंगे. I mean, the a-hole sitting right in front of you, like 1 meter away, doesn't even know you. He's a complete stranger and you don't know him. क्या फर्क पड़ता है भाई वो तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है. कोई स्ट्रेंजर अगर तुम्हारे बारे में कुछ बोल रहा है, वो भी अपने 2-3 लोगों के बीच में, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई. उनको बोलने दो. उनका काम यही है बोलना, क्योंकि वो खुद वहां नहीं पहुंच पाए जहां तुम हो अभी. एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट you don't know what they are talking about. हो सकता है वो तुम्हारी तारीफ भी कर रहे हो. Keep that in mind. So all in all, be confident in yourself, be confident in your hairstyle, and don't be afraid of the people. They are present all over India, no matter where you go. Now the fifth and the final thing, grow a beard if you can. लंबे बालों के साथ beard का तो भाई अलग ही combination है. Like if you talk about Brock O'Hearn or Jason Momoa or like any other celebrity with long hair, they've all got beards. और उनकी गलती नहीं है भाई. बियर्ड लंबे बालों के साथ अलग ही कॉम्बिनेशन बनाती है. that shape it makes with the long hair, man, that is something. और अगर तुम बियर्ड नहीं ग्रो कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं भाई, थोड़ा वेट करो. अगर टीनेज में हो भी तुम 19 even 20, थोड़ा वेट करो, आ जाएगी. अगर नहीं बियर्ड आती है तो you can try other remedies like minoxidil or something like that. You can search all over internet, man. हर कोई beard उगा रहा है भाई, हर कोई उगा सकता है. तुम भी उगा सकते हो, even if you think you cannot. So beard and long hair make an awesome combination. Grow a beard if you can, and even if you cannot. Okay, so that was it for this video. I really hope you found out something new and interesting, and now you're going to rock your long hair like a pro. And with that being said, I'll catch you in the next one.